मित्रों कुसुम.net में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 24 स्टोर प्रोसीजर इन एमवीसी पार्ट 1। तो चलिए चलते हैं। इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे। पहले तो हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इन एमवीसी, फिर हाउ टू एक्सेस स्टोर प्रोसीजर यूजिंग डेटा एंटिटी मॉडल, ओके, एंड यूज दैट स्टोर प्रोसीजर इनसाइड ऑफ द कंट्रोलर एंड पास द डेटा टू द व्यू एंड डिस्प्ले द डेटा। सो बिफोर ये पार्ट देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस पार्ट 21, 22 और 23 को जरूर देखें। चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। ये मैंने मेरा एक एप्लीकेशन रेडी किया है, नेम दिया है स्टोर प्रोसीजर, और इसमें मैंने एक स्टोर प्रोसीजर कंट्रोल बनाया है, ओके। और दिस स्टोर प्रोसीजर कंट्रोलर में ये सारी मेथड मैंने क्रिएट की है। तो अभी मेरे पास जो है एक टेबल है, लॉगिन टेबल। इनसाइड ऑफ दिस टेबल आई हैव आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड एंड लास्ट लॉगिन, एंड आई हैव सम डेटा इनसाइड ऑफ दिस टेबल, ओके। और मुझे ये डेटा जो है लॉगिन टेबल का डिस्प्ले करवाना है व्यू पेज में यूजिंग स्टोर प्रोसीजर एंड एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट। सो मैं क्या करूँगा, पहले तो स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा। तो क्रिएट स्टोर प्रोसीजर के लिए मुझे स्टोर प्रोसीजर पे जाके क्रिएट स्टोर प्रोसीजर करनी है। तो स्टोर प्रोसीजर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, और कैसे राइट करनी है स्टोर प्रोसीजर वो देखते हैं। तो इसे डिलीट मारते हैं, लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, सपोज इट इज sp get login, okay, to display the data of the table, okay, as select star from table name is login, so login, select star from login, okay। तो ये मेरा स्टोर प्रोसीजर डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो कंप्लीट हो गया। इसे मैं अपडेट कर देता हूँ, लेकिन अपडेट करने से पहले यहाँ पे कोई स्टोर प्रोसीजर पड़ा है। सो refresh this and delete that same store procedure name I have created before. So I have delete this one and create this new one. ओके, तो इसे हम अभी क्रिएट करते हैं। तो अपडेट पे जाते हैं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और पहले वाला अभी भी डिलीट नहीं हुआ है, सेम नेम का प्रोसीजर मैंने बनाया था। अब ये क्लियरली डिलीट हो गया है, और मैं एक नया स्टोर प्रोसीजर ऐड करके इसे क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर and control A, paste it here, okay। Okay, update database, store procedure is created. Now I will create one data entity model inside of the model folder. So right click on this, add data entity model, and give it the name store procedure model, okay, and click on that next button and select your database name, click on next, okay. Now choose here your table name. So table name is login, I have selected it. Store procedure, whichever I have created sp get login. So store procedure and table will be included in this data entity model, right. Now I will save it and debug it, build it. So first save this model and build it. So build store procedure.
right? Now I have already created the controller. Okay, this is my store procedure controller, and inside of this there is index method. I will right click on this, add view page, and using list. Okay, model class, login tables model class, and data context class is db entities2. Click on add. So view page will be added, and I want to display my login data, login tables data here. But before that, I have to return model from controller side. So I will write here the logic for that. Before that, I want to know what is my context class name is. My context class name is here store procedure db entities 2. Okay, so right here store procedure db entities, but it cannot show. Context class, I will use here that namespace of that model. Using application name is store procedure dot models. Models, inside of models my data entity model, so I can access now. Store procedure db entities 2 is my context class, and I will create object for that. So new store procedure db entities 2 here, and I will create one variable data equal to new, not new, using that object of db. So db dot, you want to display the data, okay, using the store procedure. So what will I write? I will access now the store procedure which I have created, sp get login. Okay, and use this variable data inside of the return view so that I can return the model. Okay, and in my page here this login table I have access. Now first we see in our model I have to access that store procedure. So using model browser function imports this store procedure, right click on this edit and add the entities of that login table using the store procedure. We want to use the store procedure inside of the login table, so it will access now using this edit entities. Now you will build all your project using build store procedure. After building it, I will run my program and will check whether it displays the data of the login table or not. You can see here my data of the login table is displayed now here. This is my login table and here is one row. That same row is displayed here. So this type you can achieve the data using store procedure using this method, right? So अभी यहीं पे ये मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू. हैव ए ग्रेट डे.